My dear students, today we will be studying about the third application of Gauss theorem. We had studied about in application of Gauss theorem, electric field intensity due to a infinite length conductor wire. Second, electric field due to a uniformly charged conductor spherical shell. But third application, the electric field due to a non-conducting sphere or volume distribution of charge. We know in application of Gauss theorem we will study about the electric field intensity due to the different distribution of charge. हम इसमें जो है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में स्टडी करते हैं. तो टुडे वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्जेस नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटर spherical shell. We know when the some amount of charge given the non-conducting sphere, the charge uniformly distributed in total volume is called non-conducting spherical shell. अगर किसी भी स्फेरिकल शेल को अगर आप चार्ज जो है कोई भी चार्ज दे रहे हो, अगर वो चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो इट इज कॉल्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल और इंसुलेटर स्फेरिकल सेल. कंसिडर ए नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड सेंटर ओ. वी कैलकुलेट द electric field intensity at a point P due to the uniformly charged non-conductor or non-conducting spherical shell at a point P of distance r from its center. If the plus Q charge uniformly distributed in total volume of sphere, then the volume density of charge rho is equal to Q by V. We know when the charge distributed in the whole volume of a conductor is called volume density of charge, rho is equal to Q by V. First, if point P lies outside from the sphere, अगर हम सपोज करें कि पॉइंट P जो है इस पूरे नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स के जो है बाहर है कहीं पर. इन दिस केस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. फर्स्ट वी चूज ए इमेजिनरी सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r which passing through from the point P. First, we choose a imaginary surface of radius smaller which passing through from the point P is called Gaussian surface, and take a small area element dA at the point P of area vector dA perpendicular away from its center. यहाँ पर आप एक पॉइंट P पर जो है एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे जिसका एरिया डी है और डी का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर. वी नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अवे टू द इंफिनिटी. द electric flux passes through the
through the small area element d phi e is equal to vector e dot vector dA is equal to e into dA cos theta, where theta is the angle between vector E and vector dA. Vector E and dA. We know vector E and vector dA parallel each other, where vector E and vector dA parallel each other. Then theta is equal to 0 and cos 0 is equal to 1. Put the value of theta in equation 1. Then d phi E is equal to E into dA. The total amount of electric flux passes through the Gaussian surface. Closed integration d phi E is equal to closed integration E into dA, where phi E is equal to E constant, closed integration dA, where closed integration dA is equal to 4 pi r square, area of Gaussian surface. You know the area of Gaussian surface is equal to 4 pi r square, or phi E is equal to E into 4 pi r square. Taken equation 2. According to Gauss theorem, phi E is equal to q upon epsilon naught. Taken equation 3. Compare the equation 1 and 2. Compare the equation 2 and 3. We get E into 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught, or E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q by r square. It is formula of electric field at the point P from the outside of the non-conducting spherical shell. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. So the electric field produced by uniformly charged non-conducting spherical shell at the any point from outside is same like behave to the electric field produced by the point charge, or we say the electric field at the point P same like behave at the total charge concentrated at the center of the non-conducting spherical shell. ये जो है इस तरह बिहेव करता है कि इसका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इसके पूरे वॉल्यूम में ना जो है डिस्ट्रीब्यूट होकर इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट है, या पॉइंट चार्ज की तरह ये कॉन्सेंट्रेट है. सेकेंड कंडीशन,
if point P lies at the point at the surface of cell, अगर हम सपोज कर लें कि ये पॉइंट जो है P इसके सरफेस पर है, यहाँ पर है, तो इन दिस केस कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, दोनों डिस्टेंस R और कैपिटल R जो है स्मॉल r और कैपिटल R इक्वली हो जाएंगे. देन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर. वी नो rho is equal to Q by V or Q upon 4 by 3 pi R Q. Put the value of Q in equation 4. E is equal to 1/4 pi of silent knot into rho into 4 by 3 pi R cube upon R square. और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R क्यों, तो E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 अपसाइलेंट नॉट इंटू R. इट इज फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड produced at the surface of non-conducting spherical cell. If point P lies inside of cell, we shall assume the point P lies inside of cell. In this case, small r is equal to greater than capital, small r less than capital R. इस केस में जो है स्मॉल r की वैल्यू जो होगी कैपिटल R के वैल्यू से लेस होगी. सेम लाइक वी ड्रॉ एन imaginary surface of radius small r which is passing through the point P and choose a small area element around the point P of area dA and direction perpendicular away from its center, and vector E dash is the electric field set up by the cell of radius smaller, and Q dash is the amount of charge enclosed by the sphere of radius smaller, where Q dash is the charge enclosed by sphere of radius smaller, and E dash the electric field set up by sphere of radius smaller. Same, the electric flux passes through from the Gaussian surface d phi E is equal to vector E dash into vector dot vector dA, or E dash into dA cos theta, where theta is equal to 0, cos 0 is equal to 1,
This is because vector E parallel vector dA. The total flux passes through the total Gaussian surface. Closed integration d phi E is equal to closed integration E dash into dA. Take an equation first. According to Gauss theorem, phi E is equal to Q upon epsilon naught. Take an equation 2 R. Closed integration E into dA is equal to Q by epsilon naught from equation 1 and 2. दोनों कंपेयर कर दीजिए. तो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू फाई, अब फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ई डैश इज इक्वल इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट. टेक इन इक्वेशन 3. E dash is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q dash upon R square. It is electric field set up by at the point P lies inside in the cell. अब अगर Q dash की वैल्यू फाइंड करनी हो, Q dash की वैल्यू फाइंड करनी हो, 1 upon 4 pi epsilon naught Q dash by R square. Take an equation 4 and we find the value of Q dash. We know the charge uniformly distributed in the whole volume of the non-conducting sphere. Then rho is equal to Q upon 4 by 3 pi RQ is equal to Q dash upon 4 by 3 pi small rq. That means that volume density of charge of the large sphere is equal to the volume density of charge in small sphere. मतलब दोनों स्पेयर की जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी. कंपेयर द क्यू डैश अपॉन क्यू इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर आर क्यू होल क्यू. आर क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होल क्यू. अब पुट द वैल्यू ऑफ क्यू डैश इन इक्वेशन 4 में जो है क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दें तो ई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू. इट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एनी पॉइंट P lies inside of the non-conducting spherical cell. और यहाँ से जो है आप अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको जो वैल्यू फाइंड करनी हो इंटेंसिटी की तो यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ सेल बाय यूजिंग ऑफ फार्मूला.